क्या सोशल मीडिया पर हमें अपना डेली रूटीन शेयर करना या फिर मेमोरी के लिए फोटो या वीडियो शेयर करना खतरनाक साबित हो सकता है? तो इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर डिस्कस करें, आप इस 2 मिनट की वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. तो वीडियो में आपने देखा कि कैसे एला नाम की एक छोटी सी बच्ची की फोटो की मदद से उसका एक फेक वीडियो बना दिया गया। दरअसल आप जो सोशल मीडिया पर फोटोज या वीडियो शेयर करते हैं वो आपके लिए एक मेमोरी हो सकती है, लेकिन स्कैमर्स या हैकर्स के लिए वो एक डेटा होता है जिसका फायदा उठाकर स्कैमर्स आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर सकते हैं। जैसा कि कुछ टाइम पहले एक फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ हुआ था। इस वीडियो के थ्रू इस वीडियो में आपको बेशक रश्मिका मंदाना दिख रही है, लेकिन वो लड़की कोई और ही है और ये फेक वीडियो बनाया गया था डीप फेक नाम की एक टेक्नोलॉजी के थ्रू। दरअसल डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप किसी की भी वीडियो, फोटो या ऑडियो में फेरबदल कर सकते हैं। यानी इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी दूसरे इंसान की फोटो या वीडियो पर किसी और का चेहरा लगाकर उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि आपके साथ किस किस तरह के और कितने बड़े स्कैम्स हो सकते हैं। यानी अब किसी की भी फेक पॉर्न वीडियो बनाकर या फिर न्यूड फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। और शायद आपको अंदाजा भी ना हो कि इंटरनेट की इस ट्रांसपेरेंट दुनिया में आपकी प्राइवेसी कितने खतरे में है। सो गाइस, सब्सक्राइब टू स्टे अलर्ट।